Full toss delivery and straight to the fielder at short mid wicket. Very squarish bit of mid wicket. Will be a dot delivery to begin. 8 overs contest. First 3 overs mandatory power play. That's big. And the fielder will watch it sail over his head. That's into the crowd. Excellent delivery that time. Looking for a single chance of run out. Oh, direct hit would have been gone if that fielder would have thought that he would have given it to the keeper or maybe try and shy the stumps. Excellent delivery that time. Down the ground and will get one as Pratham comes on strike for the first time in this particular over. Trying to cut that one, missed out, dot delivery. First over in progress, 7 without loss. Final delivery coming up of this particular first mandatory over. Nicely played, straight to the fielder though. Some fumble, but not taking the single. Dot delivery to end the over. Excellent over coming to an end. To begin, Sateri Warriors 7 without loss after 1. Mohan from the gymnasium end. Swing and a miss. Dot delivery. As I would recall, Keenan was one of Goa's best let the ball cricketers. Represented Goa in the Ranji Trophy as well so many times. Very chirpy behind the stumps. Wicketkeeper batsman. Full toss. And that is dispatched for a boundary. Again looking to replicate the same, but this time missed out. Dot delivery. Score moves on to 11. Second over in progress. Fabulous first over by Chandresh Naik. High on the bat. And will get one. Single taken. Score moves on to 12. 12 without loss right now.
8 overs. What is being given to all these teams, all the finalists. Sateri Warriors up against Shamadevi Legends. Shamadevi Legends winning the toss, deciding to bowl first. Team owner Dinesh Pal always behind them. Always very supportive. Always very motivating the entire team. Oh, again trying to play it on the up. Maybe try and play it over covers. Missed out again. Pratham has scored a half century in the group game, but since then hasn't been that convincing that he could try and get some runs for his team. Full toss. Has he found the gap? No. Straight to the field. Another dot delivery. Pressure is building. Second over done. 5 coming from it. It's 12 without loss. After 2 overs, Sateri Warriors. Thank you, DJ Nandan, from the Shanta Audio. Into the crowd again. Yes, indeed it is. Another hit, another 6. A maximum on the very first delivery. Score moves on to 18. Nicely played again. Straight to the fielder, gone. Looking to try and get another one, but the fielder posted there. And Chandrish gets the big breakthrough as Piyush departs. It's 18 for 1. If any batsman at this particular point hits a maximum, will be getting rupees 1,000 from Bhaijan. Good delivery, trying to get a single. Dot delivery. Any part of this over. 3 more deliveries remaining. Within those 3 deliveries, if he hits a maximum, either of these 2 batsmen hit a maximum, then will be awarded rupees 1,000. Let's it go. That will be wide. Extras. 6 of the first, then a wicket, then a dot, now a wide. Third over in progress in this batting of Sateri Warriors, who are inserted to bat first by the Shamadevi Legends. Oh, excellent delivery. Again, fumble from the wicketkeeper. And doesn't take the run. Another dot ball.
4 deliveries, another 2 deliveries remaining. Opportunity for the batsman to get 1,000 if he hits a maximum. Reverse attempted, missed out. Dot delivery. Chandresh Nayak has been superb tonight. Just that one full toss, it got vanished for maximum. But since then, he has come back really good with that wicket also. There he goes. And gone over. And with that, 1,000 will be awarded to Rishikesh. आणि दोन पटोपट मारल्यावर 2,000. Consecutive sixes will be awarded rupees 2,000 from Baijan. Mohan will continue from the gymnasium end. 3 overs done, 25 for 1. Mohan has come on. If Rishikesh can hit another maximum on the next delivery that he faces, then he'll be awarded rupees 2,000 by Baijan. Just below us, cheering for him. Not happy with something, maybe. Just halt. Short delivery. And oh, just gone over. The field has hit and that's gone for 4. Score moves to 29. This time short and wide, and that will be wide. Extras. Score moves on to 30 with that extra. 30 for 1. 4th over in progress. 8 overs game. Pratham batting on 4. His partner 6 at the other end. Again a wide. More extras. 2 back-to-back wides. Officials in the middle. Very senior most umpire. Vaman Mayekar sir. Very disciplined. And always wants the games to be on time and everything to be perfectly handled. And his partner tonight is Rajesh Signapurkar. Another excellent umpire. Nicely played. And oh, just bouncing ahead. And that's gone for 4. They move on to 35. 35 for 1. First 2 deliveries of this 4th over. Again, just trying to play the uppercut. Missed out. Dot delivery. Big match coming up next. The grand finale of the All Goa Panchayat and Municipality level heavy ball cricket tournament of the Darvi Chashak 2.0. Team from the north and team from the south
battling it out against each other. SS Brothers, Parsim from the North Goa. Nicely played, worked around, down to deep square leg, will just be one. Another single taken, score moves on to 36. SS Brothers Parsim up against the team from Kushavati district, that is Hakshavi Shusai Sheldon. That will be a close contest. Two of the best sides in Goa. Nicely played on the bounce of the field at deep mid wicket. Will just be one. Another single taken. What started with 2 boundaries, 2 wides is closing in a pretty tidy over. Mohan, last delivery of the 4th. Here's that delivery, Pratham on strike. Reverse attempted. Has he found the gap? Indeed he has. Fast outfield. Once you clear the infield, it's always a boundary. That's gone for 4. 4 overs done. It's 41 for the loss of 1. Will be changing voice as Ashok Naik sir will take over for the next 4. थैंक यू, धन्यवाद श्याम का लंगुटकर। 4 ओवर समाप्त हुए, 5वें ओवर की शुरुआत। इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, बिट क्या बल्लेबाज को। ऋषिकेश की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 पर प्रथम बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 पर स्कोर, 41 लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर समाप्त हुए। ड्राइव किया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। साईराज गेंदबाजी कर रहे हैं और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 42 रन पर। सातेरी वॉरियर्स और श्यामादेवी लीजेंड्स, इन 2 टीमों के बीच में यह मुकाबला। घूमकर मारा इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर और गेंद निकली डीप फाइन लेग सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। शॉट अप लेन गेंद, बैकफुट पर स्क्वायर कट करना चाहते हैं तो ऑफ साइड पर अपने आप पर थोड़ा सा नाखुश हो गए, नाराज हो गए। मालूम था एक मौका था बड़े शॉट के लिए ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर। और इसी बीच साईराज की अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला ऑन साइड पर। पहले रन के बड़ी तेजी के साथ निकले और गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने। 49 पर पहुंचे टोटल, 5वां ओवर जारी है। साईराज गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर बैटर है ऋषिकेश। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, फिर से एक बार सिंगल बनेगा। सातेरी वॉरियर्स इसी के साथ एक सिंगल के साथ टोटल उनका पहुंचता हुआ 50 रन पूरे होते हुए 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 10 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम 50 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर।
थैंक यू डीजे, धन्यवाद। शांता साउंड फोंडा टॉस जीता। फील्डिंग का फैसला शामादेवी लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी कर रहे सातेरी वॉरियर्स। 5 ओवर समाप्त हुए, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी। छोटी गेंद पोल किया इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और सीधी मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में। छोटी गेंद थी लेकिन उतनी ताकत नहीं लगी, सफलता मिली और दूसरा विकेट इसी के साथ चला गया टीम का। लाइव एज के साथ जो दर्शक ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से शॉट खेला और किस तरह से कैच। नए बल्लेबाज मैदान पर, लेकिन तब तक ले चलते एक बार फिर से हमारे शांता साउंड के साथ। सफलता मिलती हुई गेंदबाज नवरेश को और नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोर 50 रन 2 विकेट पर। विशाल आ चुके न्यू बैटर। बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, रन के लिए निकले। गेंद निकली सिलमिडॉन की तरफ। लेग बाइज का इशारा, लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और धीरे धीरे नवरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मैच सामने बिल्कुल। डे नाइट की ये प्रतियोगिता आज 5वां दिन, आखिरी सफर, और स्कोर है 51, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी वाला शॉट इस बार, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। बैकवर्ड कवर पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद चली गई 4 रन के लिए। कामाक्षी क्रिकेटर्स आयोजित दळवी चषक पर्व दूसरा। स्कोर 55 रन 2 विकेट पर सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। ओ, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सफलता और एक मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। टॉस सीता, फील्डिंग करते हुए श्यामादेवी लीजेंड्स क्रिकेट टीम। एक अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ नवरेश का। इस ओवर में 2 सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और उनके सामने नए बल्लेबाज आ चुके। सौरभ उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर सौरभ के लिए ऑन साइड पर एक डीप स्कोर लेके, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर थोड़ा सा फिर से परिवर्तन, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर को तैनात किया है सौरभ के लिए। ओवर पिच गेंद सामने खेला, अपने फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया और एक सफलता मिली नवरेश को इस ओवर में।
श्यामा देवी लीजेंड्स क्रिकेट टीम की ओर से सबसे सफल ओवर तो ये ओवर है। 3 विकेट अब तक 4 रन सिर्फ खर्च की चुके हैं नवरेश, और अब और एक नए बल्लेबाज आते हुए राहुल उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बेट करती हुई एक बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त हुआ, जिस ओवर में 4 रन दिए 3 विकेट चटकाए नवरेश ने। खेल 6 ओवर का समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 55 रन पर रुका हुआ, टोटल 4 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी में परिवर्तन, सुनील आ चुके हैं पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वो आ चुका है बॉलिंग मार पर। 55 रन 4 विकेट पर सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम थोड़ी सी जो कि कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है रनों के लिए, विकेट भी खो रही है। एक फिर से साझेदारी बनानी पड़ेंगे, आने वाले सिर्फ 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी है। और बॉलिंग मार पर सुनील, 7वें ओवर की शुरुआत, सामने बल्लेबाज है विशाल और नॉन स्ट्राइकर इन पर है राहुल। ऑन साइड पर हल्के से मोड़ा गेंद को फाइन लेग की तरफ, बहुत बेहतरीन फील्डिंग इस बार। शॉर्ट फाइन लेग पर एक शानदार फील्डिंग और एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 56 लॉस ऑफ 4 विकेट, 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सुनील अपने बॉलिंग मार पर और सामने बल्लेबाज है राहुल। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। क्या शानदार गेंदबाजी, फिर से एक बार बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। और क्या गेंदबाजी, पिछले ओवर में भी शानदार स्पेल किया था नवरेश ने, जिस ओवर में नवरेश ने 3 विकेट चटकाए थे। और जो दर्शक लाइव एज के साथ जुड़ चुके हैं दड़वी चषक पर्व दूसरे में, आप रिप्ले में भी देख सकते किस तरह से ये गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और बल्ले का सिरा लेते हुए बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में, और एक कामयाबी मिलती हुई मैदान पर श्यामा देवी लीजेंड्स क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर विशाल का साथ देने के लिए। 56 लॉस ऑफ 5 विकेट, आदित्य। इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई स्क्वायर लेग पर, फील्डर लेकिन नो मैच लैंड में गिरते हुए, और जब तक गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 57 पर पहुंचा, टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। विशाल 1 पर, आदित्य 1 पर, गेंदबाजी पर सुनील। 7वां ओवर, पुलर लेन की गेंद स्लिमडाप की तरफ निकली, एक सिंगल के लिए कदम बढ़ाए, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक और सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में 58 पर। बहुत अच्छा जो कि गेंदबाजी का, जो 4 ओवर में 41 रन थे वहीं से लेकर 5वें ओवर में 50, और नवरेश का एक शानदार ओवर, बहुत अच्छा ओवर। ऑन साइड पर खेला इस बार स्क्वायर लेग, अंपायर के बगल में स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को आते उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार सिंगल पूरा किया। कोई बड़े शॉट के लिए बिल्कुल मौका नहीं दे रहे पिछले ओवर में नवरेश, और इस ओवर में सुनील, जिस सुनील ने पिछले मैच में भी बहुत किफायती गेंदबाजी की थी।
और 2000 रुपए का इनाम सिक्सर लगाने के लिए बल्लेबाज के लिए भाईजान जिनके ओर से। थैंक यू सर। फुल टॉस उड़ाया इस बार, बड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई। सिक्सर सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 65 रन 5 विकेट पर एक सिक्सर के लिए जो 2000 रुपए का भाईजान ने इनाम रखा था, उस इनाम को प्राप्त करते हुए विशाल और एक बार इनाम जारी है सिक्सर के लिए 2000 रुपए का भाईजान की ओर से। शानदार ट्रॉफी दिखाई दे रहे हैं, आप सामने एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइव एज के साथ ट्रॉफी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत ट्रॉफी। एक बेहतरीन शॉट इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है 66 पहुंचा टोटल स्कोर। आखिरी ओवर नवरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे नवरेश ने। ये बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। सातेरी वॉरियर्स और एक विकेट खोती हुई 66 लॉस ऑफ 6 विकेट। नए बल्लेबाज दत्ता आ चुके हैं मैदान पर और सिक्सर के लिए भाईजान की ओर से 1000 रुपए का इनाम जारी हो चुका है। इनाम बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन सामने नवरेश चौथा विकेट चटकाते हुए। लंगा पर फील्डर सीधे हाथों में, 5वां विकेट। जोरदार तालियां नवरेश के लिए। जब बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है तो हम जरूर उनकी तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं। मैं कहूंगा नवरेश का ये स्पेल 5 विकेट उससे कोई बिल्कुल कम नहीं है। 66 लॉस ऑफ 7 विकेट। थैंक यू डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर सुनील आ चुके हैं। 66 लॉस ऑफ 7 विकेट। आखिरी ओवर का खेल जारी है, 1-2 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है। सातेरी वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और नवरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, ओहो क्या कमाल की फील्डिंग, हैट्रिक मुकम्मल, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस कैच के लिए। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग।
थैंक यू डीजे। और नवरेश के लिए इनाम आ चुका 1,000 रुपए का मन्ना, इरफान मन्ना जिनकी ओर से, थैंक यू सर। और न्यू बैटर मैदान पर इस बार फिर से हवा में गेंद मिड विकेट पर, ओहो 2-3 कैच छूटा। क्या ये रिकॉर्ड बनता अगर ये कैच को पकड़ते? तो थोड़ी सी गुस्ताखी माफी सर, दलवी सर की ओर से जो कि इनाम रखा था वो 1,000 रुपए का सर सचिन दलवी जिनके ओर से। ड्राइव किया इस बार और क्या शानदार फील्डिंग, लेकिन देखना होगा, अंपायर का इशारा जरूर होगा, अंपायर का इशारा होगा। सचिन आ चुके हैं, आदित्य बल्लेबाज उनके साथ, और फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी, फील्डिंग कमाल की रही और अंपायर का इशारा हो चुका है। तो अंपायर ने जानकारी दी चुकी है, गेंद निकली 4 रन के लिए, तो 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 71। शानदार गेंदबाजी नवरेश की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की नवरेश ने। एक ही मैच में शायद और एक वो कैच पकड़ दे तो देखिए देखिए रिप्ले में देखिए किस तरह से हवा में गोता लगाया, गेंद को अंदर किया, वहां पर फिसले गिर पड़े और तब तक गेंद निकली थी 4 रन के लिए। तो टोटल बन चुका है 71 और मैच को जीतने के लिए बनाने 72। जैसे ही दूसरी इनिंग की शुरुआत, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आवाज बादल चौधरी और हरीश काकोड़कर के साथ। Check this, check. Check this. Check this, okay, fine. This is Aponda Constituency Finals. And it's a big finals happening here. And Dinesh Paul is so happy with the team performance. He was dancing around the Ponda. So only one simple question to all the viewers out here. I could see approximately 3,000 packs for the Chashak. Who will be the winner? Is it Sateri Warriors? If it is Sateri Warriors, wave your hands and scream aloud. Is it Shama Devi? Is it Shama Devi? Scream aloud, I could not see you. Is Shama Devi? Or is Satari Warriors? Lots of spectators supporting both the teams because both the teams are from Ponda constituency and they have just bid for the players for this auction, and it's a mega finals happening and the winner will take home the big trophy. So let's see who wins
We are asking a simple question. Who will be the winner for this? Who will be the man of the match? Let's see how many sixes in this. So here we go. So we are all set. The bowler is all set. The batsman at the center. Let's see what exactly happens. थँक्यू अशित. नमस्कार. देव बरा करो गाववाल्यानो. मालवणी कोकणी आकाशवाणीच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फोंडा केंद्रावरसून परत एकदा तुमचा सगळ्यांचा अगदी मनाकाळजासून हात जोडून स्वागत. 72 रन्सांचा टार्गेट पाठीवर घेऊन सलामीची जोडी. स्ट्रायकर एंडवर पियुष. पहिलो चेंडू सन्मान देताना हलक्या हातान खेळान काढलो पियुषने. दुसऱ्या साइडीन उभो असा कौशल आणि बॉलिंग मार्कवर सुद्धा स्कोर बोर्ड आता बघूया. स्ट्रायकर एंडवर सुनील, नॉन स्ट्रायकर एंडवर कौशल आणि बॉलिंग मार्कवर पियुष. पहिलो चेंडू समाप्त. कट करण्याचा प्रयत्न, अनएक्सपेक्टेड बाउन्स, टप्प पडल्यानंतर उसळी घेत चेंडू विकेट किपरच्या दिशेन. डॉट बॉल. पहिले 2 निर्धाव चेंडू. काय जबरदस्त गोलंदाजी पहिल्या इनिंग मध्ये. नवरेश ह्या नाव लक्षात ठेवचा लागतला तुमका. 10 धावांचो खर्च करून 6 विकेट 8 ओव्हरच्या मॅच मध्ये. जबरदस्त परफॉर्मन्स. तर एक कॅच जर मिड विकेटच्या हातात रवला असता, एक लॉंग ऑनच्या हातात रवला असता तर अजून आकडे थोडे वेगळे दिसले असते. क्षेत्ररक्षणाचो नमुनो अत्यंत उच्च दर्जाचो. 8 ओव्हरीच्या मॅच मध्ये 72 धावांचा टार्गेट बघून जरी त्या सोप्या वाटला तरी जसा दिसता तसा नसता आणि म्हणान जग फसता. दुरून डोंगर साजरे आणि जवळ गेले तर सगळेच काजरे. आणि या क्षेत्ररक्षणामुळे या कमी धावसंख्येचा टार्गेट अजून थोडा मोठा बनवता लागतला सातेरी वॉरियर संघाक. खेळ संपलो पहिल्या 3 बॉलचो. रन फक्त 1 सुनीलच्या नावावर. परत एकदा कट करण्याचा प्रयत्न, लेट कट करण्याचा इरादो. पिच कडसून मिळणारी मदत आणि त्यासाठी नाव घेऊचा लागतला नक्कीच आमचे पिच क्युरेटर भीमसिंग वंटमुरी. 4 वर्षापूर्वी हवेलीचा मैदान सुद्धा याच भीमसिंग सरांनी बनवला आणि सध्याच्या घडीत ह्या दिसणारा मैदान गेले 5 दिवसच या मैदानावर चाललेलो हो रणसंग्राम. आणि तो रणसंग्राम ज्या कुरूच्या भूमीवर चालू असा या रणमैदान बनवला आमचे पिच क्युरेटर भीमसिंग वंटमुरी यांनी. कव्हरच्या दिशेने अलॉंग विथ द कार्पेटचा फटको. एक सिंगल. दोनही बॅटरच्या नावावर दोघांनी आपली बोनी केली. आपापल्या अकाउंटमध्ये पहिलो पगार जमा केलो 1-1 रन्साचो. हे आमचं मान्यवर कक्ष. मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित आमचे सगळे मान्यवर. हे आमचे सगळे स्पेशलाइज क्रिस्टल ट्रॉफी. लोअर फुल टॉस. मनगटी फटको मिड विकेटच्या दिशेन. फिल्डर चेंडूच्या मागे अगदी सहज केला क्षेत्ररक्षण. पहिल्या षटकाचा खेळ झालो समाप्त. 72 धावसंख्येचा पाठलाग आणि धावसंख्या स्थिरावली इन मीन 3 रन्सावर. चलचल डबल तो पहिला बॉल किती डबल घेतला. पहिल्या ओव्हरचा खेळ झालो समाप्त आणि धावसंख्या इन मीन 3. चलचल पुढे आणि 3-3 वडे. या मालवणी कोकणी म्हणीची आठवण करून देताना करूचे असत 72 आणि हे 72 करण्यासाठी थोडीशी मशागत करूची लागतली, मेहनत करूची लागतली. संध्याकाळचा सत्र मैदानावर थोडीशी धुक्याची चादर बॉलर मैदानावर हवी होतात आणि अशा वेळी 8 ओव्हरीत 72 धावांचा टार्गेट ह्या थोडासा कठीण असा. किती कठीण मालवणी कोकणीत सांगायचा तर ह्या बैलाचा दूध काढण्यासारखे असा. पण जर तुम्ही मेहनत केला तर वाळूतून सुद्धा तेल येता, मग बैलातून सुद्धा दूध काढू शकतात. पण आज कोणाच्या नशिबात असा दूध आणि कोणाच्या नशिबात असतो खरवस. पहिल्या ओव्हरीत रन झाले 3. हे मान्यवर कक्ष, हे सगळे स्पेशलाइज क्रिस्टल ट्रॉफी आणि हे आमचे सगळे प्रेक्षक रसिक राजा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत. दुसऱ्या ओव्हरची सुरुवात मिडॉनच्या दिशेन. एक फटको ज्याच्यावर सध्या तरी एका सिंगलची आशा. 1 रनसानीची धावसंख्या 4 रन्सावर. प्रेक्षकांकडे नक्की जाऊया. जे प्रेक्षक तहान भूक घरदार इसरान ही स्पर्धा बघण्यासाठी मैदानावर उपस्थित हे आमचे रसिक राजा प्रेक्षक. प्रेक्षक गॅलरी बसण्यासाठी त्यांची केलेली व्यवस्था, त्यांच्यासाठी स्नॅक्स
या रसिक राजाचे अगदी मनपूर्वक आभार असत. गेले 5 दिवस तुम्ही ही स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीवर नेलात. या सगळ्या प्रेक्षकांचे अगदी मनाकाळजातून आभार. धावसंख्या 4. मनगटी फटको मिनी हेलिकॉप्टर मिड ऑफ क्लिअर करून लंग ऑफच्या दिशेन बघता बघता चेंडू सीमारेषा पार. दळवी चषक चौकार. प्रेक्षकांका विनंती असलेली समोरच्या स्क्रीनकडे सुद्धा बघा, म्हणजे स्क्रीनवर तुम्ही दिसल्यानंतर जरा हात उंचावून तुम्ही दाखवतो. रन झाले 8. दुसऱ्या ओव्हरीत सौरभ दुसऱ्या बॉलवर केलो चौकार खर्च. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. मिड विकेटच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार. जळी स्थळी आणि काष्टी पाषाणी. दळवी चषक षटकार. षटकारांनीशी बदललो धावफलक 14 रनचावर. ही माऊली बघा आपल्या या भावी खेळाडू घेऊन मैदानावर उभी असा. स्वागत असा ताई तुझा. आणि हे युवा खेळाडू असत, या भविष्य असा आमच्या पोंड्याच्या क्रिकेटचा. एक सिंगल षटकारानंतर धावसंख्या स्थिरावली 15 रनचावर. जी माऊली प्रेक्षागृहामध्ये असताना खराच तिचा कौतुक असा. हे संस्कार असत आपल्या मुलांवर. हे भावी खेळाडू गोय राज्याचे गोमंतक भूमीचे या भविष्य पोंड्याच्या उज्ज्वल क्रिकेटचा. 72 जो पाठलाग. धावसंख्या 14. परत एकदा आडवी बॅट. मिड ऑफच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार. आश्चर्य नवल की चमत्कार. दळवी चषक षटकार. षटकारांनीशी धावफलक 20-20. पहिल्या विकेटसाठी दमदार भागीदारी. सौरभ लेफ्ट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजीचो अगदी खरपूस समाचार घेताना बॅटर कौशल. 2 सलग षटकार. अँगल बनवण्याचा प्रयत्न असा LBW क्लीन बॉल साठी, पण त्याचा पुरेपूर वापर बॅटवर चेंडू घेण्यासाठी. परत एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू. फसलेलो फटको. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली उडालेलो कारंजो आणि विकेटचा पतन. कोकणीत सांगायचं तर कोंडीचे भाटी आणि भाटीचे कोंडी. ही पहिली विकेट 20 रनचावर. त्याने घेतलं म्हणलं कौशल. 2 षटकांची सांगता झाली. धावसंख्या 20 रनचावर. 36 बॉलमध्ये अजूनही 52 धावांची गरज. यापूर्वीच्या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच सुनील स्ट्रायकर यांच्या दिशेने 5 बॉलमध्ये 3 रनचावर. ही जोडी बघा, माय लेकराची जोडी मगाशी बघितलात आणि आता चेडवा बरोबर बापूस स्क्रीनवर बघा. ही जोडी सुद्धा नक्कीच वेगवेगळ्या क्षेत्रात हे खेळाडू घडवण्यासाठी आपल्या मुलांवर हे खेळाचे संस्कार होणं गरजेचं असा. राज्यस्तरावरचे खेळाडू आपल्या फोंडा नगरीमध्ये येऊन कसे खेळतात हे आपल्या मुलांका दाखवणं गरजेचं. आडवी बॅट. स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून घासून नाही अगदी ठासून. दळवी चषक षटकार.
षटकारानिशी बदललेलो धावफलक 26 रनचावर. इक्वेशन सुद्धा बदलला. 12चा करंट रन रेट सध्या रन रेट पुरेसा असा. धावगती सध्या तरी पुरेशी दिसता, पण ह्या मैदान ही खेळपट्टी कधीही बॉलरवर प्रसन्न होणारी असा. विशाल बॉलिंग मार्कवर विचार करता ही खेळपट्टी पहिल्या इनिंग मध्ये जशी नवरेश्वर प्रसन्न झाली तशी माझ्यावर कधी प्रसन्न होतली. पहिल्या बॉलवर सिक्सर. विशालचा स्वागत. दुसरा बॉल सुनील साठी. परत एकदा सुनीलचा फटको. मिडॉनच्या कपड्यावरसून बॅटरचा उसूल करायचो षटकार वसूल. दळवी चषक सिक्सर. मान्यवर आमचे बघा, आमचे प्रेक्षक बघा, आदरणीय दळवी साहेब या सामन्याचा आस्वाद लुटताना आणि त्याचबरोबर सामन्याचे अपडेट सुद्धा आपल्या सहकाऱ्यांका देताना. सुनीलचे सलग 2 षटकार. खरोखरच दळवी साहेब तुमचे मनपूर्वक आभार असत. फोंडावासियांक ही दर्जेदार स्पर्धा तुम्ही दाखवलात. भव्य दिव्य म्हणजे काय असता या शब्दाचा अर्थ आज फोंडावासियांक तुम्ही समजावून सांगितलात आपल्या कृतीमधून. एक सिंगल. तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर धावसंख्या तिर्येचो डबल गेम 33 रनचावर. एक टार्गेट असा लहानसा 72 रनचा. या टार्गेटच्या पाठलगाच्या दिशेन श्यामादेवी लिजेंड संघ समोर सातेरी वॉरियर्स 71 धावसंख्येचा बचाव करण्यासाठी. पहिल्या इनिंग मध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली नवरेशने 10 धावा खर्च करून 6 कलमाजेने आपल्या नावावर केली. जबरदस्त स्पेल होतो नवरेशचो. वर्षभर त्याची आठवण नक्की काढली जातली. यावेळी लॉंग ऑनच्या दिशेन फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि सुनीलला साथ देणारो नवरेश ज्याचा कौतुक केला बॉलिंगसाठी मैदानावर फक्त हजेरी लावून परतलो. 33 धावसंख्येवर दुसरी विकेट. स्क्रीनवर बघा हे प्रेक्षक खय उभे असत, खयच्या गडग्यावर उभे असत. धूम्रपान करना सेहत के लिए मना है. हा ता एक बरा केले बाबा. पाटीधर काय असा कॅमेरो तुझ्यावर रोखलेलो असा. सगळे प्रेक्षक जा काय करतात त्या सांभाळून तुम्ही सीसीटीव्हीच्या नाही कॅमेऱ्याच्या कक्षेत असात आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात तुम्ही पोहोचतात. ह्यो आमचं कॉमेंट्री बॉक्स. आमच्या मागे आमचे गुरुवर्य अशोक नाईक सर आणि त्यांच्या सोबत साईश नाईक. अचूक आकडेवारी आणि ठाम मत साईश. थँक्यू कॅमेरामॅन, थँक्यू. धावसंख्या 33. तिर्येचो डबल गेम 72 रन्स टार्गेट. हलक्या हाताचा फटको, ढिल्या हाताचा फटको. थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये एक सिंगल फक्त मिळालो. धावसंख्या बदलली 34 रन्सावर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. 72चा टार्गेट. विशालने पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार खर्च केले. हे प्रेक्षक बघा बॅनरच्या मागे उभे असत, बॅनरच्या मागे बसले आहेत. आणि दळवी साहेब तुमचे मनपूर्वक आभार. या आयोजनाबरोबरच प्रेक्षकांसाठी स्नॅक्सची सुद्धा तुम्ही व्यवस्था केलात आणि त्यामुळे हे सगळे प्रेक्षक खुश असत. तहान भूक विसारणा म्हणजे काय असता त्याचा अनुभव सुद्धा आज त्यांनी घेतलो. आणि आमचे कॅमेरामन लाईव्ह एजची टीम तुमचा कौतुक असा. मैदानावरच्या खेळाडूंका तुम्ही दाखवलात, प्रेक्षकांका सुद्धा तुम्ही दाखवतात. इक्वेशन बदलला. 30 चेंडू शिल्लक, 38 धावांचं लक्ष. आणि परत एकदा ह्यो आमचं कॉमेंट्री बॉक्स. आमचे मार्गदर्शक हरीश काकोडकर सर तुम्ही सुद्धा स्क्रीनवर असत. हरीश सर असत. त्याचबरोबर आमचं डीजे नंदू तू सुद्धा एकदा बघ कॅमेरावर. तुमचे 5 दिवस इतके सुमधूर करणारो नंदू स्क्रीनवर तुमका दिसता. थँक्यू. लाईव्ह एज बऱ्याच वेळा कॉमेंटेटर काळाच्या पडद्याआड जातात कॉमेंट्री करून सुद्धा. साईश असा, हरीश सर असत, अशोक सर असत, आमचे कॅमेरामॅन सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. ही संधी तुमका ज्यांनी दिली लाईव्ह एज आदरणीय विश्वनाथ अपूर्व दळवी साहेब, त्याचबरोबर कामाक्षी क्रिकेट क्लब, प्रोग्रेसिव्ह फोंडा या सगळ्यांचे अगदी मनपूर्वक आभार.
ज्यांनी ज्यांनी स्पर्धेसाठी प्रायोजकत्व घेतला त्या प्रायोजकांचे आभार. हे मान्यवर कक्ष आणि स्पेशलाइज क्रिस्टल ट्रॉफी. चौथ्या ओव्हरीचा पहिलो बॉल लॉंग ऑफच्या दिशेन, फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि विकेटचा पतन. विकेट नंबर 3. राजू फक्त एका रनचावर माघारी. ज्या प्रकारे ही भूमी बॉलरवर प्रसन्न होता, खरोखरच भीमसिंग सर तुमचे आभार असत. कारण बऱ्याच वेळा फ्लॅट खेळपट्टी, हे आमचे प्रेक्षक बघा, ही अजून एक बाहुली बघा. हे दोन बाहुले एकत्र असत, विचार करतात आज तर शाळा चुकवली, उद्या आयतवार असा, सोमवारी काय करूया. हे आमच्या दोन बाहुलेंचा सुद्धा अगदी मनपूर्वक स्वागत असा. तुमका सुद्धा भविष्यात येऊचा, ह्या मैदान गाजवचा असा आणि त्या गाजवताना दळवी चषकाची आठवण आयुष्यभर ठेवची. ह्यो बलून बघा, प्रोग्रेसिव्ह फोंडा असं म्हणतात. ह्या नाव प्रोग्रेसिव्ह फोंडाचा. आणि सोबत कामाक्षी क्रिकेटचा मिस फिल्डिंग झाली, थोडीशी ढिलाई झाली. काखेत रवळी आणि गावभर होवळी ह्या कोकणी म्हणीची आठवण इली. चुलीर खापार आणि गावभर यापार ही सुद्धा म्हण आठवली. फक्त 1 रन, धावसंख्या 35-35. चौथ्या ओव्हरीचो दुसरो बॉल सरलो. सुनील 9 बॉलमध्ये 16 रन्स स्ट्रायकर एंडवर. त्याका साथ देताना मोहन नॉन स्ट्रायकर एंडवर. पियुष बॉलिंग मार्कवर. अमृत पसायदानातला बॉलिंग मार्कवर दिसता. ड्राईव्हचो फटको फॉलो थ्रू मध्ये थोडा वेळासाठी संधी तर तयार झालेली. ज्ञानेश्वर माऊलीने लिहिलेली ज्ञानेश्वरी, त्या ज्ञानेश्वरीच्या सांगतेखेरीस नेवासेच्या भगवान श्रीकृष्ण मंदिरामध्ये त्यांनी जगासाठी मागितलेल्या पसायदान आणि त्या पसायदानातलो एक सुंदर शब्द पियुष, ज्याचा अर्थ असा अमृत. आपल्या संघासाठी अमृत पहिल्या चेंडूवर त्यांनी दिला विकेटच्या स्वरूपात. तो पियुष बॉलिंग मार्कवर. मिडॉनच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलो. चेंडू षटकार मारण्याच्या नादात अजून एक खेळाडू तंबूच्या दिशेने करूक गेलो नरकासूर आणि तयार झालो संकासूर. पहिल्या इनिंग मध्ये नवरेशने 6 विकेट घेतले आणि या इनिंग मध्ये आतापर्यंत 4 ओव्हरी संपाच्या आधी 4 विकेट सातेरी वॉरियर्सने घेतले. याचा कारण काय? हिशोब पेंडिंग नाही, ट्रेंडिंग ठेवतो असता. हे आमचे आणखी बाहुले बघा, हे आमचे भगिनी बघा मैदानावर उपस्थित असत. त्यांच्या समवेत त्यांच्या घरातले सहकारी सुद्धा. खराच तुमचा सगळ्यांचा मनपूर्वक स्वागत. गेले 5 दिवस या कडाक्याच्या थंडीत उपस्थित रवान तुम्ही ही स्पर्धा रुजवलात, फुलवलात, झुलवलात. या सगळ्या माय माऊलींचे, माता भगिनींचे, रसिक प्रेक्षकांचे आणि त्यांच्यासोबत इलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार. 36 यो धावफलक, ऐतिहासिक फिगर, हिस्टॉरिकल फिगर करूचे असत. 72 निम्मे पल्लो पार झालो, अजूनही निम्मे तुमका करूचे असत. पियुष गती परिवर्तन, फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण, डॉट बॉल, 36 धावा, हिस्टॉरिकल फिगर. जे 36 रन्स करण्यासाठी सुनील गावस्कर सरांका 60 ओव्हरीची अख्खी इनिंग खेळायची लागली. जे 36 रन युवराज सिंगने ब्रॉडच्या एका ओव्हरीत केले आणि ते 36 रन विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात ऑल आउट होऊन बनवले एका कसोटीमध्ये. ते 36 रन. स्कोरबोर्डवर ड्राईव्हचा फटको फॉरवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षण तर सुंदर. निर्धाव रवलो चेंडू. तीच हिस्टॉरिकल फिगर स्क्रीनवर. 4 षटकांची सांगता. 4 ओव्हरीमध्ये झाले ॲक्युरेट 36. उरले 4 ओव्हरी. त्या 4 ओव्हरीमध्ये करूचे असत परत 36. होतले नाही होतले, होतले की नाही होतले हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर होतलो बदल. ऐकूया आवाज आमचे मार्गदर्शक मित्रवर्य हरीश काकोडकर सर.
A wonderful contest, well balanced. 36 in the first 4 overs and 36 still remain. So 50% of the runs have been taken in the 50% of the overs. Another 50% remain. And that is what a crowd always anxiously wait for. A good contest. Out of the 16 teams, one topped in every group, which was separated into 4 groups. And after leading in the group, they fought against each other in the semi-finals. And these are the 2 teams that are playing for the Ponda constituency. Shamadevi Legends and Sateri Warriors. Some wonderful players in this team who are, I certainly feel, are the talent to go ahead. Will take Ponda definitely places further in the progressive way in cricket. Some good bowlers, and certainly I can call it Saurabh, who is right now in the bowling mark. Has been impressive in this tournament so far, and has got once again another opportunity here to shine brightly in this arena. Is looking to drive the ball, man in the deep. They're just cautious at the moment. Maybe they are feeling we got maybe another 3 overs after this one. If we lose a wicket here, we might lose the complexion of the game. The match is still alive. And they are not going for the big hits. They are just pushing around for singles. And that's not bad either for Sateri Warriors. Because if at all they take around 5, 6, 7 runs, the asking run rate in the next 3 is going to creep up slightly. It's at the moment 39 for 4 in 4.3 overs. The target is 72, and that is what the captain was talking, Piyush. $39 for 4, 4.4 overs. Saurabh so far conceding 3 singles of the first 4 balls. Nicely put away, but he finds the fielder in the point short covers region. No runs conceded, and then you can see what is the feeling of playing in the finals. This ball will tell you how much is the pressure on the bat. It's a full toss ball. On any other given day, on any other given match, this will have fetched 6 runs. Finals is a special match. It's the only game that brings so much of pressure on any batters, because they know that Derby Chashak 3.0 is going to be 1 year away, and they have to bat their skins out. They have to bowl out of the skins to win this coveted prize now, and this is the moment for them. And this is what they are fighting for. On the screens you can see beautiful glass trophies. One for the winner in this contest, one for the winner in the next finals. Has it touched? We're certainly waiting for the batter. Yeah, it looks like it's flicked it, but finds the fielder in the short fine leg region. Exceptional bowling. He bowls a wide there, but considered just 5 runs. So they've kept it very much tight in the last 3 overs. 31 needed of the last 18 balls. So you can see the center stage, and you can see a lot of kids as well who are keenly watching. They will be superstars of tomorrow. Huge crowd witnessing this epic game. We are almost at 12 o'clock on 3rd of January, but no one is moving an inch, and no one is giving a seat to anyone, whether it's a friend or family member. Short ball, just maybe little late to react.
And these are some of the stars who are going to play for the next 5 years or 10 years down the line, representing Fonda or Koti Kanepar Panchayat or Fonda Municipality. So all are playing here, leg by signal. And many of these players play in Dalvi Strikers. For Dalvi gives them the platform and the stage to represent in Goa's different Panchayat and Municipality level tournaments. Some of the players are playing in the finals here, like Piyush. Man in the very short covers. Left by the batter, left by the keeper. And it's a wide call. 43 for the loss of 4 in 5.1 overs. One good over here. One good over for Shamadevi Legends. And that asking run rate will come down to somewhere around 8 runs per over. This is what they are hoping for in the last 2. That's bang. Off it goes from the light into the dark and goes into the crowd. That's what they were hoping for. A full toss one that's been smacked out of the park. And suddenly that released the pressure on the batter, Shamadevi. .49 for 4. In the air, should be a chance, gone. A 6 of the previous ball and a wicket of the next one. That's what everyone comes to enjoy here. Sunil, after playing a wonderful knock of 25-14, has perished. And suddenly the celebrations have begun. Sometimes it's up for the batting side, Shamadevi Legends. And you can see dull faces in the Shamadevi Legends. They know that the legendary player and the star has gone back into the pavilion and pressure will be right back on them. .49 for 5, one short of the half century for the team. But it's not about getting 50, it's about getting that 72 to be crowned as the champions of Honda constituency. Over the top, might get a boundary. Oh, well stopped. Very well stopped. Appreciated by the crowd. They know the value of each run and each boundary saved is precious. That is what the champions are made of. You don't want to give an inch away, and they are battling it out. They are fighting it out. They're sweating it out. Well, this match is giving us the chills. It's the temperatures are going down here in Goa and in Ponda, but it's soaring high inside the ground. Smacked away, man in the deep, might be a chance. Oh, he dropped it. He dropped it, and in return, .52 for 5 in 5.5 overs. That's a top shot, absolute top shot of the top draw. Slightly short and cut away, square cut for a boundary. And that's a good finish. End of over number 6 is 56 for the loss of 5. Just you can see giving himself room on the leg side and cutting it away over the backward point region. And that sails for 4 runs. That's a good finish that they were hoping for after they lost a wicket of this over. 56 for 5 after 6 overs.
So 16 runs to win. 16 needed in the last 12 balls. Equation exactly where Shamadevi Legends wanted. At 8 runs per over. That is exactly 16 from 12. Crowd is still hoping for another turnaround. Match going to go right into the last ball, just like we witnessed that amazing semi-finals where Anshwi Shivsai Sheldon team has won that game and entered into the finals of the last ball. Nagbhushan defending that 10 runs in the last over and saving the day for his team. It might be such a situation, you never know. One good over here, wicket taken, an absolute brilliance here from someone in the field can turn this match. Looking to hit very hard. Just got bottom part of the bat and taking a single down towards the short square leg mid wicket region. It's 57 for 5. 15 runs needed of the 11 balls. Vishal bowling his second over. First over slightly on the higher side, scoring 14, conceding 14 runs. Sairaj looking to just walk across the stumps and play. I think he wanted to find that region in the backward square leg, fine leg region. But I think the ball came slightly quicker. I reckon the way that things are going is just a matter that a batter hits one out of the park or the bowler scoops one in the air. Once again, trying to find that space on the leg side. Backward square leg fielding has been decent. So they are just dealing in singles. They are rotating the strike. They're just not finding that boundary. I think a boundary will just ease off the target. 14 runs needed of the last 9 balls. That is what a final that everyone want to witness. This is an absolute special one. Absolute thriller here. Slowly and steadily. Moving towards his ultimate goal. And that goal is to clinch the trophy. Bowler has bowled a dot ball that's gone straight in the hands of the keeper. And with that, the pressure mounts back on the batting side. It's going up and down, up and down, up and down. At this stage, the pressure mounting. Suddenly it's releasing and it's back on top. Gone! Or is it chance? A big chance coming their way. And it's been taken. It's the best fielder around. Pratham Gowde. He never drops catches. He's the skipper of the side. He knows that the big trophy is just up for the grabs. And he can't lose this one. He never lost sight of the ball at any point of time. Because the sight was on his trophy. That winner's trophy. And that's why he grabbed it so precisely. Yeah, you can see the crowd. Crowd is almost everywhere. You can see them on the screens. They are on the top of that hillock there. And saying hi there. You have been caught. Live age. We are catching everyone. Glimpses of the faces. Nicely bowled. Lower full toss. Whipped away on the leg side for a single. But I think this is a beautiful over. He has kept so many runs in the last over. There were 16 runs required and he just concedes 3 runs in this over. What a fabulous over under this situation. Now 7 overs done. 59 for the loss of 6. Is 30 needed of the last 6. We have got a blockbuster finals on our hands, ladies and gentlemen. Don't go away anywhere and don't lose your seats to your partners. Thirteen runs needed of the last 6.
That's the equation. You defend 12, you are the winner, Sateri Warriors. If they get 12, we have got a super over. If they get 13, then Shama Devi Legends are the winners. That's how the difference in this game. The Fonda champions are just 6 balls away. 6 balls away. Let's see who holds their nerves. This game will be remembered for posterity. Amazing to see so much of talent in Ponda. And that's why I think you must appreciate Vishwanatha Purudarvi for giving us this fascinating cricket. Pratham hurrying on to the batter. He tries to whack the ball around. Just going to get a single. The captain was saying, Piyush, that 70 runs should be our first target during the toss. And they were certainly very well fought. I think they captured the middle period. That over number 5 to over number 8. They hung on tightly, not conceding too many sixes, not conceding too many boundaries. And now keep saving for the last 5 balls. 12 needed. The short ball played away really well and might get a boundary. Shot down the leg side, clipped away well in the gap. Crucial boundary. Everyone is firing on each other. Bowler is bowling, but no one is firing him. He knows that he might lose the focus. It's very important not to fire on the bowlers. It's important to just stay calm. The game is still a long way. You almost sail the oceans. You almost sail the oceans, but I think the docking is still left. Let's see who docks the ship. Very close. It's not always about hailing and sailing into the storm, but it's always about docking it to perfection. And that's why they always say the greats are born, ones who finish well. And here is an opportunity to be remembered for a long time. All these players, whoever will be champions, will be remembered because we always remember who is the champions, not who are the runners-up. 64 for 6. The winner takes it all. That's how the game is. Another shot. This is top shot. Absolute quality. Absolute quality here from the batter. What a drama here unfolding. It's almost like the semi-finals we witnessed 1 hour ago. And it's almost going the same direction. Well, they were in a good position, but I think they squandered a good position here by considering बाउंड्री लाईनच्या फाटल्यान रावपाक जाय. सगळ्यांक विनंती करता बाउंड्री लाईनाच्या फाटल्यान रावात, कित्याक मॅच इम्पॉर्टंट आसा, क्लोज आसा आणि बॉल खंय वचपाक शकता. 4 needed of 3. That's gone. Oh, somehow saves it. He somehow saves it. Well, lucky the owner, lucky the bowler. Can you believe that? He never used his hands, he used his legs. And sometimes we see a lot of football being played in Goa and it helps. Well, in Goa, we love every sports and everyone loves the game of cricket, no doubt about that. But we have seen many good footwork and handiwork done by the shoes that was done on this occasion. Now it's 3 needed of 2. And it's Chandresh. Short ball in the air. No, it goes in the gap. Might get a boundary and there are the champions. Oh, he has saved it. He has saved it. What is happening? What are the scenes here? What has happened over there? It's been referred on top. Oh my gosh. It's absolute cinema. It's absolute cinema here. It's almost like going and clinching the World Cup. You are touching the skies and coming back down. They were all storming inside. They were all storming inside. And suddenly they have to come back. What scenes here on this ground at Ponda SAG.
I mean, this is an absolute thriller. Cinematic experience. We are definitely going to refer it. If 2 runs are being scored, it's going to be a tie. So very much want to see it very closely because it's all about the championship. 1 run it is that differentiate. So it's safe. And non-striker ender batter is out. Safe fielding. The scores are tied. 1 needed of 1 ball. Check. Check this. Check this. The pressure on both the teams. What will be the result? 1-1. Last delivery. Who will be the champions? Is it Sateri Warriors? Omkar Tilve? Is it Shama Devi? Dinesh Pal? Bowler is all set to bowl. Chandresh on strike. Everybody has taken the field position. Here we go. 1 ball. 1. Let's see. That's gone. They are the winners. Shama Devi Legends. Chandresh has hit a square cut and they are all storming on the ground. Look at the scenes here. An absolute amazing and electrifying. Wow. Finally, we know who are the champions of Dalvi Chashak 2.0. Ponda constituency is none other than Shama Devi Legends. But take nothing away from a fighting and resilient performance from Sateri Warriors. It's just been pure brilliant at the last over. But we have witnessed one epic game, one epic finals. And these are the scenes that everyone wants to see, everyone wants to enjoy, and everyone wants to cherish. But the moment is for Shama Devi Legends. They have captured it all, and they are the champions of Dalvi Chashak 2.0 Ponda constituency. Player of the finals will be announced later. Check. Check this. Check. As you can see, in the center, they already lifted up. Later,